أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Dear fellows, students and postgraduates, we were talking previously about the acute viral hepatitis. So I have already talked hepatitis A, acute hepatitis A, acute hepatitis B. Very important parameters have been discussed with the B. And C also, hepatitis C, acute hepatitis C. D is associated with the B because it is incomplete virus. So it means that isolated hepatitis D is not present. Should be accompanied with hepatitis B. The only one left is hepatitis E. It is also called non-ABCD virus at one time. They don't know exactly the virus morphology, the family which it belongs, etc. Afterwards, they have found it, and they named it hepatitis E. So I am Professor Sayyid Ali Haider, and this is session 4 of acute hepatitis, and I am the visiting professor of the Janassan Medical University. Now, hepatitis E actually is the virus, the RNA virus, a major etiological agent. Indirectly means the fecal route, and it is non-A hepatitis worldwide because A is also spread with fecal oral route. The difference is this, that hepatitis A is usually seen in the younger ages, teenagers, 25 up to 25 years of age. Usually not present after the age of 35 years. But hepatitis E can infect any age group. In many studies, the third and fourth decades are more affected. These are the ages which are more affected. So, this is a single-stranded RNA virus actually, and it is spread by the fecal route. It means a sole member of the genus, it is called the Hepativirus. The only member of this group. The new group is there, genus Hepativirus. Two major species are described: mammalian, which is called acute hepatitis in humans, and the reservoir of infection are pigs and related animals, and possibly range of other mammals. An avian type of the hepatitis E virus causing big liver and spleen disease in the chickens. So two species are recognized still yet. And there are genotypes that have been described. Genotype 1, 2, and 3, 4 are also described. It is a serious liver disease. Actually, the hepatitis E is pathogenetically very, very invasive type of a virus, and it results in acute infection just like it, but destruction of the hepatocytes are more seen. The important thing is that it does not lead to the chronic infection in most of the cases, not all, because one type is called genotype 3. There are two conditions in which case hepatitis E can be lethal. One is in the developing countries, if genotype 3 is involved, there are chances of chronic infection leading to chronic hepatitis and leading to cirrhosis. Secondly, in transplanted liver, if the transplanted liver is infected with E, it will destroy the liver and causing the chronic hepatitis in transplanted liver. There are two important points regarding this. I have seen this case. Hepatitis E leading to the chronic hepatitis leading to cirrhosis and ultimately death of the patient.
So hepatitis is common in many parts of the world. Is usually seen in developing countries. It's a problem of developing countries. Fecal root I already said, and it occurs because of the contaminated water supplies in these countries with the poor sanitation. Incubation period is higher, it is 15 to 60 days, mean 40 days. फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो है वो 30 दिन पहले, 1 महीने पहले जो है वो छोले की चाट वाट खाई थी कहीं पे, उसको याद नहीं है अब, और उसी का पानी जो ठेले वाले का पानी भी पिया था, उसको डायरिया वायरिया कुछ हुआ था, वो ठीक ठाक हो गया, बाद में मतलब जॉन्डिस हो गया पेशेंट, उसकी एज जो थी वो 50 ईयर्स थी उस पेशेंट की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब इसमें देखिए कि ये 40 डेज इसका मीन है, हायर है इसका, इस इक्विवेलेंट टू हेपेटाइटिस बी का जो मीन है उसके बराबर है ये, जबकि ए का जो मीन इंक्यूबेशन पीरियड है वो छोटा होता है। सिम्टम्स सेम है जैसे किसी भी एक्यूट हेपेटाइटिस के होते हैं, वायरल हेपेटाइटिस के, दैट इज एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, डिसटेस्ट टू सिगरेट, डार्क कलर यूरिन, एपिटोमिकली पेनफुल, jaundice, malaise, nausea, vomiting, same one. Clinical features are the same. The fate is important. In this case, the outcome is good. Recover completely. In most of the cases, 99%. Only 1% can lead to a problem. That is, it can cause acute fulminant hepatitis, or either if the genotype 3 is involved in the developing countries, or in transplanted liver, it will cause the cirrhosis of the liver. Otherwise, definitely the outcome is good. The overall case fatality rate is less than 4%. But it is important virus in the pregnant women, very important. Because in these women, pregnant women, in the second or third trimester, if she acquired this infection, it is a bit harmful, serious infection. And the fatality then rises to 10% to 30% or more than that in the pregnant woman, particularly in the third trimester. And how will you diagnose it? Diagnose it definitely clinically. You cannot diagnose it. You have to go for the LFT, which are definitely hepatocellular jaundice. IgM anti-HEV is available. IgG anti-HEV is available in your country. This is the diagnostic criteria. IgM is to be positive in the acute infection. And the resolving one, the IgG is rising. This is constantly rising. It is a protective antibody. तो IgM बेस्ड डायग्नोसिस है, IgM anti-HEV करवा के देख लीजिए, और अगर जहाँ पे ये PCR होता है तो और अच्छी बात है, 100% श्योर अबाउट इट, RNA आप करवा लें इसका PCR पे, आपको डायग्नोज हो जाएगा। ये आसान सी बात है बहुत। एपिडेमियोलॉजी यही है, जो मैंने पहले भी बता दिया था कि ये ज़्यादातर जो है सेकेंड डिकेड के अंदर के बाद इम्पोर्टेंट है। ये आउटब्रेक्स होती हैं इसकी, ये एपिडेमिक होता है, एंडेमिक भी होता है कुछ कंट्रीज़ में, और इसका जो है वो स्टूल जो इन्फेक्टिव होता है, ज़्यादा जिन लोगों को हुआ है उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए, अगर दूसरे पेशेंट्स इन्वॉल्व, दूसरे पर्सनस इन्वॉल्व हो जाएंगे। ड्रिंकिंग वाटर इसका मेन सोर्स है, लेकिन जो मीट है ख़ास तौर पे पिग्स से रिलेटेड, मैमल्स से रिलेटेड इन्फेक्टेड अगर वो है मीट, तो उससे भी ये हो सकता है। लेकिन ये ए कॉमन है ज़्यादा, ई इज़ नॉट वेरी कॉमन रादर इन कंपैरिजन विद हेपेटाइटिस ए। इसमें दिखाया यही गया है कि हमारी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व में, देखें आप इसमें, यहाँ इंडेमिसिटी बहुत ज़्यादा है, साउथ ईस्ट एशिया है और सऊदी अरब है और ये सारी कंट्रीज हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, पूरा डेवलपिंग कंट्रीज हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर ये बहुत कम मिलेगा आपको, ना होने के बराबर। लेकिन अब कनाडा में और उसके इर्द गिर्द के एरिया में तो है ही नहीं, ना होने के बराबर। और कुछ जो है वो
सब इंडेमिक हो सकता है पॉसिबल इन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हो सकता है पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया भी बचा हुआ है इसमें, देखिए। इसकी वजह ये है कि सैनिटेशन, हाइजीन, तहारत, हाथ धोने के तरीके, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो भी होगा ना, ऐसे तो नहीं बच सकते ना इससे। कोई ड्रग तो है नहीं एंटीवायरल जो आप दे सकें। सैनिटेशन इज इम्पॉर्टेंट, डिस्पोजेबल ऑफ फीसेस इज इम्पॉर्टेंट। आपको हैंड वॉशिंग आनी चाहिए, 5 उसके जो होते हैं स्टेप्स होते हैं, उसके साथ उसको किया जाए। नेल कटिंग प्रॉपरली की जाए, बच्चा है तो डायपर चेंज किया जाए। और इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ जो ईटिंग फ्रूट जो है, फूड जो आप मीट ख़ास तौर पे जब इसको करते हैं तो अच्छी तरीके से उसको हाई टेम्परेचर पे उसको फ्राई करें, तो उससे भी हो जाएगा ये। जो हमारे शौकीन मिजाज दोस्त हैं ब्रोस्ट खाने वाले और फास्ट फूड खाने वाले, ज़रा एहतियात रखें इसको। तो अच्छी तरह प्रिपेयर होना चाहिए फूड को, हाइजीनिक होना चाहिए सो कॉल्ड, एंड कम से कम ये है कि वो इन्फेक्टेड ना हो। आपको लगे खाते वक्त कि इसमें कोई आपको मतली महसूस कर रहे हैं या उसकी स्मेल सही नहीं है तो छोड़ दीजिए, मत खाइएगा। तो ये जो हेपेटाइटिस ई है, इसमें जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिवाय चंद लोगों को जो कि क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो सकता है पॉसिबल जीनोटाइप 3 से, या ट्रांसप्लांटेड लिवर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, उनमें अगर हेपेटाइटिस ई हो जाए। ये इसका खुलासा है, मुख्तसर लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर जो BCQ बनते हैं, 3-4 इम्पोर्टेंट BCQ बनते हैं, वो मैंने बना के भी मैंने कहा आपसे पहले मैं दे चुका हूँ, जिनासिन मेडिकल यूनिवर्सिटी बैंक को दे चुका हूँ। तो इसको अगर आप सुन लें, इतनी सी बात की, ख्याल है 10-12 मिनट की गुफ्तगू है, तो ये आपको किताब पढ़ने से बेहतर है आप इसको सुन लें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह ताला। इससे बाद में जो बात करेंगे, तो अब जब एक्यूट हेपेटाइटिस आपने डिस्कस किया तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी डिस्कस करें, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस डिस्कस करें तो सिरोसिस भी डिस्कस करें, और सिरोसिस जब डिस्कस करें तो आप उसकी कॉम्प्लिकेशन भी डिस्कस करें। तो ये सारी की सारी एक चैनल में कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। मैं ट्राई करता हूँ, बताने की कोशिश करूँगा, आई ट्राई माई बेस्ट। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।